The title of the topic is Message Authentication. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain message authentication approaches. इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards by William Stallings. इंक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए क्या काम करती है? इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैसिव अटैक्स सच एज ईव्सड्रॉपिंग. तो जब आपका एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, तो जो सेंडर है अगर मैसेज को इंक्रिप्ट कर देता है तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स से ये इंश्योर किया जा सकता है कि आपका जो रिसीवर है उसको वो मैसेज इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा और कोई अटैकर दरमियान में या कोई ईव्सड्रॉपर उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता. अगर आपने कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी हो अगेंस्ट falsification of the data and the transactions, तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हमें यूज करनी पड़ेगी मैसेज ऑथेंटिकेशन को. तो मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या प्रोसीजर है? इसे प्रोसीजर क्या जो अलाउ करता है कि दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज दे कैन वेरीफाई दैट द रिसीव मैसेजेस, जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अदर कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो क्या है? ऑथेंटिक है. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन. नंबर वन, आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जो मैसेज के जो कंटेंट्स हैं वो ऑल्टर नहीं हुए. नंबर टू, आप ये भी वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जो सोर्स है वो भी ऑथेंटिक है. सो अगर हम इसको इन दो बुनियादी जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं इनके अलावा अगर कुछ कंसीडर करना है तो वी विल आल्सो बी इंटरेस्टेड इन वेरीफाइंग कि जो एक मैसेज है उसकी टाइमलाइंस क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर एक सोर्स था, एक सेंडर था, उसने एक मैसेज जनरेट किया और आपका जो अटैकर था उसने उस मैसेज को समहाउ आर्टिफिशियली उसमें डिले पैदा कर दिया एंड देन रीप्लेड लेटर ऑन. तो हम ये क्या करना चाह रहे हैं? उसकी जो टाइम लाइन्स हैं इसको भी समहाउ वेरीफाई करना चाह रहे हैं. एंड वी विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन द सीक्वेंस रिलेटिव टू अदर मैसेजेस फ्लोइंग बिटवीन टू पार्टीज. तो अगर आपका जो सेंडर था अपने रिसीवर से जब बात कर रहा था तो एक टाइम क्रिटिकल एक मैसेज था, तो अटैकर क्या करता है? उस टाइम क्रिटिकल मैसेज को पकड़ के उसे थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता है एंड देन लेटर ऑन ही रीप्लेस इट. सो दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस. फर्दरमोर, अगर उसका सीक्वेंस का ऑर्डर भी डिस्टर्ब कर देता है, दिस कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस. तो ये जो सारे इश्यूज हैं दे आर रिलेटेड टू डेटा इंटेग्रिटी. नाउ मैसेज ऑथेंटिकेशन का जो पहला मेथड जो हम बात करने जा रहे हैं दैट यूजेस इंक्रिप्शन. So we can perform authentication by using simple symmetric encryption algorithms. So what we do is हम assume करते हैं कि जो sender है और जो receiver है they are sharing a key and that means only genuine sender would be able to encrypt a message successfully. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? जो sender है उसकी को authenticity को evaluate किया जा सकता है. जो रिसीवर है it assumes that no alterations have been made and the sequences is proper if the message includes an error detection code. अगर आप एक error detection code उसमें डाल देते हैं, कोई फील्ड डाल दें, तो आप क्या करें? अगर तो वो error detection code और आपका जो मैसेज है वो आपस में टैली नहीं करते तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन हो गई है. फर्दरमोर, आप एक सीक्वेंस नंबर यूज कर सकते हैं सो दैट यू कैन चेक द सीक्वेंसिंग ऑफ द मैसेज. अगर तो एक मैसेज, आपका जो मैसेज है उसके अंदर आप टाइम स्टैम्प को भी इंक्लूड कर दें तो जो रिसीवर है ही इज अश्योर्ड अबाउट दैट द मैसेज हैज नॉट बिन डिलेड बियॉन्ड, जो आपका जो नॉर्मल नेटवर्क का डिले है उससे बियॉन्ड वो डिले नहीं किया गया है. अगर आप ऑथेंटिकेशन के बारे में जो सेकंड अप्रोच है देयर इज ऑथेंटिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट इंक्रिप्शन. अगर आप इंक्रिप्शन के बगैर परफॉर्म करेंगे, फॉर दिस पर्पस हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड एन ऑथेंटिकेशन टैग. उसे जनरेट करें एंड अपेंडेड टू ईच मैसेज फॉर ट्रांसमिशन. द मैसेज इज नॉट इंक्रिप्टेड इटसेल्फ. तो आप मैसेज को इंक्रिप्ट नहीं करते एंड इट कैन बी रेड एट द डेस्टिनेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑथेंटिकेशन फंक्शन. तो आप क्या कर सकते हैं? जो मैसेज है उसको इंडिपेंडेंटली रीड कर सकते हैं. बिकॉज द मैसेज इज नॉट इंक्रिप्टेड, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड. तो यहां पे वो आपका गारंटी नहीं कर सकते कॉन्फिडेंशियलिटी को. सो वी कैन कंबाइन इंक्रिप्शन ऑफ द मैसेज एंड इट्स ऑथेंटिकेशन टैग इन वन सिंगल एल्गोरिथम. लेकिन टिपिकली ये क्या किया जाता है कि जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है वो अलहदा होती है और जो आपकी मैसेज इंक्रिप्शन, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज, टू सेपरेट फंक्शंस.
اب ہم آتے ہیں میسج اتھینٹیکیشن کوڈ پہ جسے میک بھی کہتے ہیں. دس میک از اے ٹیکنیک دیٹ انوالوز دا یوز آف سیکرٹ کی ٹو جنریٹ اے اسمال بلاک آف ڈیٹا. تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس میسج اتھینٹیکیشن کوڈ جنریٹ کرتے ہیں جو ایک اسمال بلاک آف ڈیٹا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اپینڈیڈ ود دا میسج سو دیٹ یو کین ویریفائی, یو کین اتھینٹیکیٹ دا میسج. جو میک ہے اٹ assumes that two communicating parties, let's say A and B, they are sharing a common secret key, KAB. So KAB is the secret key which is shared by A and B. So when party A wants to send a message to party B, وہ کیا کرے گا, it will calculate the message authentication code, and this message authentication code can be calculated like this, is equal to MACM is equal to F. F is a function. F is the name of the function. اب اس فنکشن کو آپ دو آرگیومنٹس دے رہے ہیں, ایک تو جو سیکرٹ کی ہے which is shared by A and B and the message itself. تو اس کی جو آؤٹ پٹ آئے گی آپ کے پاس ایک میسج اتھینٹیکیشن کوڈ آئے گا. آپ کیا کرتے ہیں, اس میسج کو لیتے ہیں پلس دا کوڈ, ان کو کمبائن کرتے ہیں اینڈ دین یو ٹرانسمٹ اٹ ٹو دا انٹینڈیڈ ریسیپینٹ. جو ریسیپینٹ ہے وہ کیا کرے گا, it will perform the same calculations on the received message using the same secret key to generate a new message authentication code. The received code is compared to the calculated code. تو جو آپ نے کوڈ ریسیو کیا اور جو آپ نے کیلکولیٹ کیا ان کو آپ ٹیلی کرتے ہیں. اگر دونوں سیم ہیں تو دیٹ مینس ایوری تھنگ از اوکے. سو ان دس ڈائگرام میک کو دکھایا گیا جو میک کی ورکنگ ہے. آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ وی ہیو دا اوریجنل میسج. تو یہ ہمارا جو سینڈر ہے یہ اوریجنل میسج کو لیتا ہے, میک الگوریدم کو ان پٹ دیتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دا سیکنڈ ان پٹ دا میک الگوریدم از یور کیپٹل کی کے. اور آؤٹ پٹ کیا آتی ہے اس میک الگوریدم کی, ایک میسج اتھینٹیکیشن کوڈ آتا ہے. تو آپ میسج کو لیتے ہو, اس میک کو اس کے ساتھ اپینڈ کرتے ہو, دین یو ٹرانسمٹ اٹ اوور یور نیٹورک. تو نیٹورک کے آن دا ادر اینڈ آپ کے پاس آپ کا جو ریسیور ہے, جو ہی وہ اس کو ریسیو کرتا ہے تو وہ آپ کے میسج کو کیا کرتا ہے, میک الگوریدم کی ان پٹ پہ اپلائی کرتا ہے, جو جس کی دوسری ان پٹ آپ کے کیپٹل کے ہے. تو کیپٹل کے ریسیونگ سائڈ پہ اور سینڈنگ سائڈ پہ یہ سیم ہونا چاہیے. تو آؤٹ پٹ آپ کے پاس کیا آ گئی, آپ کا میک اتھینٹیکیٹڈ کوڈ جنریٹ ہوا. آپ میسج جو آپ کا جو میسج آپ کو ریسیو کیا تھا اس میں سے جو میک اپینڈ ہوا تھا اس کو لیتے ہیں, اور جو میک آپ نے جنریٹ کیا اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. So if we assume that only the receiver and the sender know the identity of the secret key, and if the received code matches the calculated code, اگر آپ کا جو received code ہے اور جو calculated code ہے دونوں برابر ہیں, دونوں میچ کر رہے ہیں, تو آپ کا receiver کیا assure ہو جاتا ہے, the receiver is assured that the message has not been altered during the transmission. Attacker does not know the secret key. If the message is altered but the code remains the same, then the receiver's calculations of the code will differ from the received code. اور یہاں سے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو اٹیکر تھا اس نے کچھ نہ کچھ میسج کے ساتھ آلٹریشن کر دی ہے. Secondly, receiver is also assured that the message is from the alleged sender. وہاں سے اس کو بھی یہ بھی پتا چل جائے گا. If the message includes a sequence number, then the receiver can be assured of the proper sequence. جو NIST ہے اس کی ایک اسپیسیفکیشن ہے FIPS Pub 113. It recommends the use of data encryption standard for this purpose. Your DESA is used to encrypt the message, and the last number of bits of the ciphertext are used as the code. A 16-bit or a 32-bit code is a typical which will be appended as a part of the code. So اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے میسج اتھینٹیکیشن کے ڈفرینٹ اپروچز کو اسٹڈی کیا ہے.